Hello dear students, today we will start verbs of new grammar plus for class 7th. Come to page number 64. Children, do you know what are verbs? Verbs are action words. To perform any action, to do something is verb. इस पिक्चर में भी लोग डिफरेंट वर्ब्स कर रहे हैं. अपने पार्टनर से डिस्कस करिए विच आर द एक्शंस परफॉर्म्ड बाय दीज डिफरेंट पीपल इन दिस पिक्चर. ठीक है, यहाँ पे वर्ब को डिफाइन किया गया है. एन एक्शन डन बाय अ पर्सन, द स्टेट मीन्स द कंडीशन व्हाट द पर्सन इज doing, what is the state of that person or the thing. What is possessed by a person, has, have, had. In these two sentences one is and has are verbs. are भी एक verb होता है. is, am, are, was, were, has, have, had are helping verbs. तो come to page number 65. कुछ interesting questions हैं. Fill in the blanks with the verbs that are able to read them properly. Which words rhyme with month? What is the shortest sentence in the English language is? Which common word is from the phrase God be with you? How many words can you find in there in? ये सब action words ही हम कर रहे हैं. Name the 10 most frequently used English words. Which word has the most number of meanings? What do you call a sentence that has all the letters of the alphabet? What was palindrome? Which verb use a nationality when it begins with a capital letter? ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. बिफोर स्टार्टिंग दैम मैं आपको बता देती हूँ. सिनोनिम्स होते हैं जिनका सेम मीनिंग होता है, आपको भी ये सब पता ही होगा. एंटोनिम्स होते हैं जिनका ऑपोजिट मीनिंग होता है. तो इन सिनोनिम्स सेम मीनिंग, एंटोनिम्स ऑपोजिट मीनिंग. तो कुछ प्रीफिक्स ज्वाइन करके भी हम सिनोनिम या एंटोनिम बना सकते हैं. मोस्टली हम एंटोनिम बना पाते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. मिसप्लेस एनी यूटेंसिल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इट विल बी योर्स. प्लेस के आगे हमने कौन सा प्रीफिक्स लगाया है? मिस. तो ये बन गया मिसप्लेस. ओके. You will find that ingredients disappear. DISAPPEAR disappear. Do not misuse the facilities of this kitchen, especially the electrical appliances. Misuse. Kindly do not disobey the rules about the usage of the ovens. Placing plasticware in ovens and microwaves is encouraged. Unencouraged कर देंगे इसको. UN आ जाएगा इसके आगे. For obvious reasons, they will melt and your item in this kitchen will be unspent. The new word is the unspent. Sixth, if you need to use cling film, please be careful while unrolling. Rolling is given, unrolling means usko kholna. Feel free to experiment in my kitchen. Unregarding. Measuring indications in recipes will be at your own risk. You may find your dishes unpalatable if you ignore the measurements. Do not disrespect anyone else's space in the kitchen. If you are unsure of your directions, check with me. Remember, once something has been done, it cannot be undone. मेरे साथ आप इसको करिए. सीज, कैप्चर, ऑर्डर, कमांड, चेंज, मॉडिफाई, लीव, अबंडन, एडमिट, कन्फेस, ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर, इजेक्ट, एक्सपेल, ओन, पोजेस, डिस्ट्रॉय, इरेडिकेट, foretell, predict, submit, surrender, improve, amend. ठीक है, मैच कर लीजिए एक बार फिर से. ठीक है. नाउ रिप्लेस द वर्ड्स इन द ग्रे विद द सिनोनिम्स. अब हम उनको सिनोनिम से रिप्लेस करेंगे. द पुलिस सीज द पेपर्स, कैप्चर्ड द पेपर्स. द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, कमांडेड द स्टूडेंट्स. गरिमा हैज़ चेंज, हैज़ मॉडिफाइड हर हेयर स्टाइल.
Everyone abandoned the mall when the alarm started ringing. Abandoned. Soma admitted to have confessed to have broken the mug. I can predict from the clouds that it is going to rain heavily. The war ended when both sides surrendered to peace. The slipper was hindered. The slipper hindered the door of the elevator. ठीक है, नेक्स्ट मूव, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. वर्ब्स दैट कंफ्यूज. कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो हमें कंफ्यूज कर देती हैं, जैसे कि बेयर, बेयर. बेयर का मतलब होता है यहाँ पर जो चीज़ हुई है रिवील करना, कुछ चीज़ शोर करना, और बियर माने कुछ टॉलरेट करना. तो ये इसका डिफरेंस है. डेफर, डिफर. अच्छा, डेफर किस लिए होती है? यू डेफर समथिंग व्हेन यू वांट टू पोस्टपोन. कुछ चीज़ हमें आगे के लिए पोस्टपोन करनी है तो हम उसे डेफर कर देते हैं. और डिफर होता है शोइंग द डिफरेंस, या फिर आपका ओपिनियन किसी और के ओपिनियन से डिफ़र करता है, अलग होता है. डाई का मतलब होता है यहाँ पे मर जाना, DIE, और DYE डाई मीन्स होता है किसी चीज़ को रंगना, हेयर कलर करना या कपड़ों का कलर करना. आंसर का मतलब होता है किसी क्वेश्चन का जवाब देना. एंड यू रिप्लाई टू समबडी और समथिंग. रिप्लाई इज़ फॉलोड बाय अ प्रपोजिशन. रिप्लाई के बाद हमेशा एक प्रपोजिशन आती है, रिप्लाई टू जैसे आए. और आंसर होता है किसी क्वेश्चन का आंसर देना. डाउट होता है टू बी इन डाउट मीन्स नॉट टू बी श्योर, हम उसके बाद में श्योर नहीं है. और सस्पेक्ट होता है हम उसके बारे में सोचते हैं, हम उनके बारे में एक रहस्यमय सोच रखना. डिफाई, DEFY. यू डिफाई पीपल व्हेन यू डू नॉट ओबे दैम. जब हम उनकी बात नहीं मानते हैं तो वो डिफाई करना होता है. और डिफाई कब होता है? समवन व्हेन यू वर्शिप हिम. जब आप उसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, बहुत ज़्यादा उस पर बिलीव करते हो. फ्लो होता है कंटिन्यूसली बहना, और फ्लोट होता है टू मूव स्लोली, ऊपर तैरना. फ्लो होता है बहना और फ्लोट होता है तैरना. बोरो होता है लेना किसी चीज़ को, और लैंड होना होता है देना उसे. होल्ड का मतलब होता है जो चीज़ आप हाथ में पकड़ सकते हो. होल्ड बुक्स, होल्ड बैग्स, होल्ड पर्सेस. कैच माने कोई आपके ऊपर फेंक रहा है, आप उसे तब पकड़ो, उसे कैच करो. और ग्रैब का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ का होल्ड ले लेते हो. वी ग्रैब समथिंग व्हेन वी टेक होल्ड ऑफ इट वेरी सडनली और रफली. जब हम किसी चीज़ को समझने लगते हैं तभी उसे ग्रैब भी बोल सकते हैं. लेकिन समीर ग्रैब द पिलर, उसने पकड़ लेना. ठीक है. एडमिट समथिंग, वी विल एडमिट दैट समथिंग इज़ ट्रू. हम बात मानते हैं, हम उसमें अपनी हाँ फील करते हैं. और कन्फेस कम करते हैं जब हम किसी चीज़ के लिए शर्मिंदा होते हैं तो हम कन्फेस कर देते हैं. कोई गलती होने पर हम कन्फेस करते हैं. राइज होता है इंक्रीज़ करना, और रेज होता है अपने हक के लिए या अपनी बात को कहने के लिए कुछ पॉइंट रेज करना. डिस्कवर होता है फर्स्ट पर्सन टू बिकम अवेयर ऑफ, कुछ चीज़ को पहली बार ढूंढ पाना. और इन्वेंट करना होता है इज़ टू प्रोड्यूस और डिज़ाइन समथिंग न्यू, कुछ चीज़ नई बनाना. जब कोई चीज़ कभी पहली बार बनती है, जो पहला पर्सन होता है वो उसका डिस्कवरर कहलाता है. और जब हम कोई चीज़ नई ढूंढ लेते हैं या कुछ चीज़ बना पाते हैं तो वो होती है हमारी इन्वेंशन. डिनाई होता है दैट समथिंग इज़ नॉट ट्रू, बात से इनकार कर देना. और रिफ्यूज़ मतलब होता है नो कहना किसी की बात को. टू रिफ्यूज़ इज़ टू से नो टू अ रिक्वेस्ट. कोई आपसे कुछ कह रहा है, आप उसे रिफ्यूज़ कर दो. इफ़ समबडी आस्क्ड यू अ परमिशन एंड यू रिफ्यूज्ड इट, आपने डिनाई नहीं. डिनाई माने होता है मना कर देना कि वो चीज़ सही नहीं है. रॉब माने होता है समवन टेक्स अवे योर थिंग्स बाय फोर्स, कुछ चीज़ आपसे खींच कर ले जाए कोई, वो रॉबरी हो गई. और स्टील क्या होता है? आप नहीं हो और आपके एब्सेंस में कुछ निकाल लिया, दैट इज़ स्टीलिंग. ड्रोन मीन्स होता है डाई करना, ड्यू टू हैविंग बीन अंडर वाटर फॉर टू लॉन्ग, बिल्कुल ही डूब जाना. और सिंक होना है कि पानी के लेवल से कुछ भी चीज़ नीचे नीचे बह गई, डूब गई और बह गई. हियर होता है साउंड्स को सुनना, और लिसन होता है सुनना केयरफुली. आप टीचर को हियर नहीं करते, आप टीचर को लिसन करते हो. टीचर हमेशा क्लास में बोलती है लिसन केयरफुली, हियर नहीं करते. हियर आप सॉन्ग्स करते हो. सी होता है टू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग बाय यूजिंग योर आइज़, अपनी आंखों से देखना. और वॉच करना होता है
थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ देखे, जैसे आप टेलीविज़न वॉच करते हो लेकिन सी आप थ्रू आउट द डे करते हो, पूरे दिन देखते हो। टॉक करने का मतलब होता है इन ऑर्डर टू गिव इंफॉर्मेशन, टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, कुछ बताना, और स्पीक करना होता है किसी से बात करना, ठीक है, बताना और बात करना। तो इसी बेसिस पे कुछ यहाँ पे वर्ड्स आए हैं, हम उसको टिक करेंगे। मैथ्यू एंड मैरिला डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ बॉय। Matthew and Marilla decided to adopt a boy to help out Matthew on the farm as he is growing old. When Matthew reached the railway station, he discovers a little girl and instead of a boy. Matthew decided that he likes Anne but doubts whether Marilla will keep her. Marilla defers her decision till she finds out that the mix-up happened. Soon, however, Marilla admits that she finds Anne cheerful and charming and refuses to send her back. Matthew and Marilla decided to raise her. Due to her different upbringings, Anne finds it difficult to follow instructions and often defies Marilla. But she is an honest young girl who does not hesitate to confess when she does something wrong. वो अपनी बात नहीं मानती थी. Anne easily holds grudges and cannot bear to see someone miserable. Anne gets into many scraps throughout the book. She accidentally dyes her red hair green. Anne is talkative and likes to lend her imagination to every situation. It is delightful to listen to her talk. Okay, let's move on to the next question. One verb for several words. पूरे एक सेंटेंस के लिए हम एक वर्ब में आंसर करेंगे. When Dilesh saw Sachin Tendulkar, he went to meet him. इसको हम approached कर देंगे. Went to meet him is approached. The temperature in this region keeps changing, fluctuates. Fluctuates. Tara is always ready to give help to organizations working for the welfare of the society. To give help is to assist. ASSIST, assist. Fourth, the magistrate declared Roshan not guilty of the crime. आप इसे कैसे लिखोगे? The magistrate acquitted Roshan. ACQUITTED, acquitted. The little baby smiled at me very happily. Smile को आप लिख दोगे beam. The little baby beamed at me. Sixth, the children have been talking almost among themselves. The children have been chattering. CHATTERING. The blind lady gently moved her hand along the back of her dog. The blind lady gently stroked STROKED her dog. Stroked her dog. The nation was greatly shocked by the news of the earthquake. Greatly shocked को आप stunned कर दोगे. STUNNED, stunned. Ninth, the Marathas guarded their enemies after a long battle. GUARDED, guarded. 10th, the students have learnt all the spellings. Memorized. MEMORIZED, memorized. Rabika's father urged and convinced her to join army. Convinced को आप कर दोगे persuaded. PERSUADED, persuaded. 12th, for the pie you have to boil the potatoes and crush them. Crush को आप लिख दोगे, यहाँ तक सेम लिखोगे potatoes and then mash them. बस. After a short break, the students started playing the game again. How will you rearrange it? After a short break, the students resumed the game. 14th, I shall be glad to know you have my old books for a year. I shall be glad to lend you my old books for a year. Bani watched her mother take money out of her bank account. Withdraw. Move the cradle back and forth. Cradle होता है जो पालना जिसमें बच्चा सोता है, उसको कहते हैं rock. ROCK, rock. Two armed men saw it overcome. Fill in the blanks with the verbs that can replace the words in the bracket. जो verb ठीक है उसे हम choose करेंगे. One day Vinay suggested, Grandma, can we explore
The woods. Please fill it. Beena exclaimed, "Not at all, it's not safe." Preeti whispered, "Ask Grandma if we can play in the park close to our cottage." Grandma heard that. She said, "You must not go in further than the first clump of trees which bears yellow blossoms." The children agreed and decided to play hide and seek. The children entered the woods and halted abruptly at a little distance from the clump of trees bearing yellow blossoms. Preeti said, "Let's play here." Halted. Vinay, the oldest of the lot, bullied, bullied, bullied Ashish into being the seeker. Ashish leaned against one of the tall trees and began counting up to 100. Little Riya crouched behind the closest shrub she could spot. Preeti felt she would not be visible if she slid into the small pit that lay behind the bush. Vinay clambered on one of the shorter trees. Vinay sat on one of the branches, thinking how we would enjoy watching his three cousins searching for their lost cousin. He was engrossed in his thoughts when he felt a large coarse paw grip him by the collar. Vinay froze, realizing that he was being held by a huge baboon. Vinay screamed. The next moment, Vinay lost his balance and lay on the ground. Vinay stumbled from the tree, got up and fled into the direction where Ashish was still trying to find the others. Ashish saw Vinay and shouted happily, "I spy Vinay." Poor Vinay, the big bully, was now the seeker. Okay children, I hope you have done with me. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स. नाउन हमें गिवन है, उससे हमें वर्ब बनाने हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं. ठीक है. डिपार्चर, डिपार्ट. इवेपोरेशन, इवेपोरेट. कनेक्शन, कनेक्ट. CONNECT, कनेक्ट. रिक्वायरमेंट, रिक्वायर. REQUIRE, रिक्वायर. confirmation, confirm. CONFORM, confirm. Protection, protect. PROTECT, protect. Recognition, recognize. RECONGNISE. Speech, speak. SPEAK, speak. Look, look. Look can be a noun, look can be a verb also. Formation, form. FORM, form. Government, GOVERN, govern. Knowledge, know. KNOW, know. Growth, grow. GROW, grow. Education, educate. EDUCATE, educate. Freedom, free. FREE, free. Communication, communicate. COMMUNICATE, communicate. So children, these were the exercises till page 72. For the next topic, that is subject verb agreement, we'll meet in the next video. Do watch that. Okay, thank you. Bye bye.